नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहुव यक़ूल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब के आका व मौला मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करो और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। Alhamdulillah, last Friday we listened to one of the very important aspect of the life of a believer. एक मुसलमान की ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा, a vital part of a Muslim is to be sincere towards others. Selfishness and being selfish has no place in the life of a believer. कि ज़िंदगी हमने सुना कि हर कोई गुजारता है, लेकिन अगर ज़िंदगी उस तरीके पर हम गुजारें जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सहाबे किराम ने और बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, तो फिर वही असल ज़िंदगी है। To spend the life and the time which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed us in this dunya, in this world, according to the seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and according to the lives and the footsteps of Sahaba and the awliya kiram, that is the real life. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की फ़िक्र में गुजारी। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की खैर ख्वाही और उम्मत की भलाई में गुजारी। Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam and the seerah, the historians and the Sahaba, they are witness to this, that Prophet alayhi salatu wasalam, he spent his entire life for the khair khwahi and well-wishing and sincerity towards the ummah. In the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, there wasn't a single night where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not remember the ummah. Every time he raised his hands in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing he would ask is Rabbi habli ummati. Oh Allah, grant me my ummah, forgive my ummah. And this was the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to show sincerity towards the ummah. कि हर वक्त उम्मत की भलाई का ख्याल, यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। हदीस पाक का मफहूम कि वो बंदा कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता कि जो सुबह इस हालत में करे कि उसको मेरी उम्मत की फिक्र न हो। As Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stated, a person cannot be a true believer if he wakes up in the morning and he does not have feelings and he does not have the pain for my ummah. That anyone in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, among the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how can I help them? How can I be the person who can bring good to someone's life? This was the concept that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he passed on to Sahaba. In the beautiful hadith, with the greatest words, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he reminds the ummah and he reminds us. Huzur फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता. The condition to be a true and complete and full believer, to enter into Islam completely, Prophet ﷺ says, you will not be a true believer, as in to complete your faith and the peak of your faith until you like for your brother what you like for yourself. कि जब तक तुम अपने भाई के लिए उस चीज को ना पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो. अल्लाहु अकबर. कि अपने लिए अगर हम ऐशो आराम पसंद करते हैं, अपने लिए अगर हम आराम की जिंदगी पसंद करते हैं, अपने लिए अगर हम ये पसंद करते हैं कि मैं घर जाऊं और खाना तैयार रहे, अपने लिए अगर हम ये पसंद करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो, तो फिर दूसरे मुसलमानों के लिए क्या यही सोच हमारी है या फिर हमारी सोच बदल गई है? Have we changed our mentality? Have we changed our feelings for other believers and other people around us? The way we think for ourselves, do we have the same feelings when we see someone in trouble? When we see someone, children, wearing clothes which we would not like on our children, do we feel for them? It doesn't mean that you have to act instantly. If you can't, you cannot act instantly, at least you can have those feelings. When we listen to the news and watch the news channels, when we look at the state of Muslims in Yemen, when we look at the state of Muslims in Palestine, do we have some kind of soft corner in our heart for those Muslims? And what can we do physically? कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? क्या हमने अब तक कुछ किया है financially to remember them in our prayers? ऐसा कोई हमने कदम उठाया है? This is what we call that we like for our brother the same thing that we would like for ourselves. कि हम अपने लिए आराम चाहते हैं, we like comfort, we like luxury for ourselves, we should have the same feelings for those believers who are in trouble. ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं बाहर मुल्क में ही हो. It is not necessary that those people who we feel for, they are abroad. It could be someone elderly in your community. It could be someone, a single mother who needs your help. तो ऐसे बहुत से हमें मौके अपने इर्द गिर्द मिल सकते हैं कि जिसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की तालीमात के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं. That we are trying to act upon the footsteps of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wasallam इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन जो होता है, a believer, कि सच्चा जो दीन का मानने वाला होता है, उसकी हालत ये होती है कि वो एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं. That they always wish well for others. It could be your friends, it could be a family member,
or it could be anyone who you know or you don't know, but you have those feelings of goodness for the others. This is one of the signs that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he mentioned in this hadith, and he says that the condition is not to be from the same place. ये ज़रूरी नहीं है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए खैर ख्वाह होता है, when we are sincere for other believers, not necessarily they will be from our city Leicester. They could be from anywhere around the world. अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगरचे उनके शहर मुख्तलिफ हों, even if the places they live in, those places are different, they live apart, thousands of miles away, but still they have khair khwahi and sincerity for each other. और फिर हुजूर ने फरमाया कि मुनाफिक जो है, a hypocrite, उसकी अलामत ये है कि एक दूसरे को धोखा देते हैं. They deceive each other. कि मुनाफिक कभी दूसरे को फायदा पहुंचाने का नहीं सोचेगा, इसलिए कि उसकी ईमान में कमी है या तो उसके पास ईमान है ही नहीं. तो मोमिन अगर हमें मुकम्मल तौर पे बनना है तो फिर उसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास जो कुछ है, हम जिस तरह से भी, in whichever way, it could be financially, physically, giving our time, just looking at someone with this smile, all of these things, they add up to be sincere towards other Muslims. And I'll give you 3 great examples from the history where last Jummah we heard 2. Inshallah today I will try and give you 3 very prime examples from the history that how did Muslims in the past, there were numbers, people can count them. If you look at the history of the first battle, the Battle of Badr, how many Muslims were there? Approximately 313. 313 मुजाहिद थे और उनके मुकाबले में 1200 in front of them. According to some narrations, there were 2200, and they had to fight against them who were well equipped. And Muslims, they did not have complete weaponry to defend themselves, and yet they were the victorious one. What was the quality that being outnumbered, they still became the victorious one? तो मालूम होता है कि ये क्वांटिटी की बात नहीं है कि हम करोड़ों में हैं, हम मिलियंस हैं और इसके ऊपर हम फिर फख्र करें कि इतने मुसलमान बढ़ गए हैं, कि इस्लाम जो है सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है. हाँ, ये अच्छी बात है, ये इस्लाम की हक्कानियत की दलील है. That Islam is spreading widely, it is because of the religion. Otherwise, our lives and our characters, illa mashallah, we need to improve it. So, wajah kya thi कि they were less in numbers and yet they were victorious. I'll give you an example. Hazrat Kimya-e Saadat is one of the very marvelous book from Hazrat Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, and he narrates this story. Hazrat Huzaifa radiyallahu ta'ala, वो कहते हैं कि एक जंग के मौके पर, जंग में मेरा चचाजाद भाई शरीक था, तो उसको ढूंढने के लिए निकला मैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है. Hazrat Huzaifa ibn Yaman, he says that in one of the battle, one of my cousin, he participated, and I went to look for him, what's happening with him. And he says that I found him wounded. मैंने उसको जख्मी हालत में पाया, और इस हालत में पाया कि वो प्यास की शिद्दत में था. He was asking al-atash, al-atash, thirst, my thirst. Hazrat Huzaifa, he says that I went close to him and I was about to quench his thirst. Another voice came from somewhere and said, Al-Atash, Al-Atash, Allahu Akbar. Hazrat Huzaifa says that my cousin told me, मेरे चचाजाद भाई ने मुझसे कहा कि मुझे छोड़ो, leave me, go to the one who is in more need.
Just imagine, it was the time when if he does not get the water, he would pass away. And yet, what does he have in his mind? To help other who is in more need. तो उन्होंने कहा कि आप उसको मदद करें, उसको पानी पिलाएं. Hazrat Huzaifa says that I went to the second person and I was about to give him the water. There was another voice. Al-Atash. मुझे प्यास लगी है. I'm thirsty. वो कहते हैं मैं तीसरे के पास पहुंचा. And by the time I reached to that third person, he had left from this world. And then I quickly went to the second one, and he had passed away as well. And then I went to my cousin, and he was gone too. ये क्या जज्बा था कि अपनी जान उन्होंने दे दी, लेकिन उनके दिल में ये था कि मैं किसी दूसरे को फायदा पहुंचाऊं. They gave, all three of them, they gave their lives. And first two, they sent Hazrat Huzaifa to the third one कि उसको पिलाओ. तो ये जज्बा था. This was the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you always put other brothers before your own benefits. क्या हुजूर ने यही तो फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई सच्चा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए उस चीज को पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है. When they were so thirsty, the only thing which was the most beloved to them, it was that water. And Huzur said, what is the most beloved to you? If you sacrifice for your brother, that is the sign of complete faith. कि ये तुम्हारे मुकम्मल ईमान की अलामत है. तो उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया. And there are many examples. Tafsir Sawi mentions one of the occasion from Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, one of the very greatest Sahabi and Faqih among the Sahaba. He says that Abdullah ibn Umar, that one day a gift came to his house. किसी ने तोहफा भेजा. तोहफे में क्या था? गोश्त था. There was a meat as a gift which was sent to Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala. And then he says that I thought that maybe such and such person will be in more need. So he says I sent it to the other household. मैंने दूसरे घर पे भेज दिया ये सोच के कि शायद उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. और फिर वो लिखते हैं साहिब तफसीर सावी कि वो 8 घरों से होता हुआ, the meat passed through 8 houses, 8 households. They passed on to each other thinking that there is someone else who is in more need than we are. और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि it reached to my house, कि सब घरों से गुजरता हुआ फिर वापस मेरे घर पे पहुंच गया. अल्लाह, कैसा जज्बा था उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुर्बानी की. कैसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जज्बा उनके दिलों में वदीअत कर दिया था कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ को दूसरों के लिए कुर्बान करने की हमेशा कोशिश करते थे. आज हमारे दिल इससे खाली हो रहे हैं. आज हमारा हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि सब कुछ मेरे पास हो. There is a difference between रश्क and हसद. रश्क ये है कि जब किसी के पास आप कोई चीज़ देखें, when you see someone having something that you would like to have, you desire to have it, then there are 2 ways to react to it. पहला ये होता है कि आदमी के दिल में हसद आता है. The first thing that comes in our mind is, how come he got this? Why did he become like this? Why did he achieve this? As a human being, this is the natural reaction to anyone's success. Unless otherwise, we are someone who completely into our practicing Islam and we are completely obeying the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then the first word we would say, it would be Subhanallah, that I can see my brother being successful. Otherwise, the natural and general reaction is, why is he so successful? And then
we wish that I wish I had all of that, and he did not. This is hasad, and this is jealousy. What is rashk? That when we see someone successful, then we pray to Allah subhanahu wa ta'ala कि जब हम किसी की कामयाबी देखें तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये हम दुआ करें कि अल्लाह जिस तरह से तूने उसे कामयाब किया है, that oh Allah, the way you have given him success, the way you have bestowed that person with your bounties, make me one of them too. तो ये तरीका है अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का कि बंदा एक तो अपने मोमिन के लिए वेल विशर हो और फिर उसके साथ अपने रब की बारगाह में दुआ भी करे कि ऐसा ना हो कि दूसरे की कामयाबी को देखकर हम जो है नाराज हो जाएं, बल्कि हर वक्त जब कोई बंदा किसी दूसरे को कामयाब होकर अल्लाह की हम्द करता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला यकीनन उसको भी कामयाबी अता फरमाता है. And another example of how can we be sincere to others. In our community we have many elders. बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हमारी सोसाइटी में हैं कि जो उम्र के उस मकाम पर पहुंचे हुए हैं कि जहां उन्हें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है. We have many elders in the community where their children, they are not supporting them. And you'll be surprised when you go out and talk to people, or when people come to the ulama and they talk to them, you'll be surprised what's happening in our community. We have elders who need someone to look after them in day-to-day life. And sometimes we have elders in our community who just want someone to talk to them. वो अकेले हैं, बच्चे अपने अपने घरों में set हैं, their sons and their daughters are well set in their own life with their own houses. Those old parents, they are living alone. They need someone at least to talk to them. And among us, including myself, have we ever had any encounter where we went to some elderly person and we asked them how are they, if they need anything? At the beginning of pandemic, I did mention that the majority of the people in our community who will need our support, they will be the elderly people. Because if they are isolated, if they are shielded in their houses, then how are they going to communicate? So did we ever encounter during this pandemic that we ourselves contacted any elderly person to ask them how are they, if they need any help? If we haven't, we're still alive. We can still do that. I will mention a beautiful hadith with the words of Sayyid Ahmad Kabir Rifai Rahmatullahi Ta'ala Ali, one of the greatest saints, and he is the founder of the Rifai chain and silsila. Hazrat Sayyidina Ahmad Kabir Rifai Rahmatullahi Ta'ala Ali, every time when he would meet an elderly person, कि जब हज़रत सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी बूढ़े आदमी से मुलाकात करते तो फिर वो उसके साथ उसके मोहल्ले में जाते. आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो फिर you will understand that what is karma and what happens, how we lead our life, and in return what do we get. वो कहते हैं कि हज़रत अहमद कबीर रिफ़ाई उस बूढ़े शख्स के साथ, उस बुजुर्ग के साथ उसके मोहल्ले में जाते. He would go with that elderly person in his street where he used to live, and then he would address people, those residents of that street. Hazrat Ahmad Kabir Rifai would tell them this beautiful hadith. This hadith has been quoted by Imam Tirmizi rahmatullahi ta'ala alayh. वो कहते उन लोगों से, अपने मोहल्ले उस बुजुर्ग के मोहल्ले वालों से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी बुजुर्ग की इज्जत करते हो, when you give respect to an elderly person, when you look after an elderly person, Allah subhanahu wa ta'ala will appoint someone to respect you when you are older. How amazing it is that it doesn't take too much of our time.
It could be once a day, once a week, once a month, or when we see them in masjid, talk to them with good manner, show some respect to them. And imagine those people who have elderly parents. This hadith points at a common elderly person who is not related to you. You don't know them. The only connection you have is the connection of your faith. He is a Muslim, you are a Muslim, and you look after them. Imagine if you have elderly parents and you are not fulfilling their rights. आपके घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती है, शादी हो गई है, आपकी अहलिया कहती हैं कि हमें अलग रहना है, इसमें मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है कि बंदा अपने माँ बाप से अलग रहे. It is possible that you live separate and yet you look after your parents. मसला ये है कि जब हम अलग रहते हैं और फिर अपने माँ बाप के जो हुकूक हैं उनको छोड़ देते हैं, तो फिर याद रखें कि जिस तरह से आप अपने वालिदैन को ट्रीट करते हैं, the way you treat your parents, in the future when you will have children, and we have seen many examples that you will be treated the same way. अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि माँ बाप का जो आकुल वालिदैन, माँ बाप के जो राइट्स वायलेट करता है, आखिरत में तो उसका पनिशमेंट है ही है. The person who violates the rights of the parents, the punishment he will get in the hereafter, that is for definite. And then Prophet said, he will see the punishment in the dunya too. कि दुनिया में भी वो उसका अजाब देख लेगा. बहुत से लोगों को हमने देखा है, एक बार मेरा खुद इससे वास्ता पड़ा कि एक साहब के हवाले से सुना कि भाई वो उनके बच्चे बहुत मालदार हैं, the kids are very wealthy, and he passed away in old people home. And then later I found out that the same way he had treated his parents. तो जो जिस तरह से आप अपने वालिदैन के साथ सुलूक करेंगे, तो दुनिया में आपको रहना है. Your parents will leave sooner or later, but you're gonna be living in this dunya. You will be facing your children. When you're young children, they will see you that you visiting your parents once a week, once a month. How are they gonna learn from you to treat you? They will treat you the same way. तो अल्लाह के रसूल ने आम बुजुर्ग, a general elderly person in the community, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that if you give them respect, Allah subhanahu wa ta'ala, He will appoint someone when you are old to respect you and to show you the gratitude. तो इससे हमें मालूम हुआ कि to be the part of community and to think about everyone and to be beneficial to other people and to be sincere in our life for other Muslims, this is what the true Muslim and the true Iman mean. यही मतलब होता है सच्चे मोमिन होने का, कि जब हम सिर्फ अपनी फिक्र न करें बल्कि हर एक की फिक्र करें. जिस तरह से हम जिसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उस तरह से हम उनको फ़ायदा पहुंचाएं. तो ये हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है, ये हमारी ज़िंदगी और हमारे ईमान का असल पैगाम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम ने हमें अता किया है. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम.